Now see the fifth question, what they have said. Give examples of polynomials p of x, g of x, q of x, and r of x which satisfies the division algorithm, and degree of p of x must be equal to degree of q of x. Okay, yesterday's recording I have put it on YouTube, but I didn't send you the link, so don't worry, I will send it today. So now see what they have said. In the first case, degree of p of x must be equal to the degree of q of x. So now you can take any polynomial. बस क्या condition होना चाहिए, दोनों polynomial का degree same होना चाहिए, p of x और q of x का. Like for example, for p of x, I am taking one polynomial. What it is? Suppose it is 2x square minus 2x plus 14. Okay, you can take any polynomial. It's up to you. बस क्या condition होना चाहिए? Degree should be 2. Next, q of x, I will take another polynomial, x square minus x plus 7. Okay, ये है मेरा p of x, ये है मेरा q of x. p of x और q of x ये दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन. डिग्रीज शुड बी सेम. ओके, तो अभी मुझे डिवीजन एल्गोरिदम लगा के बाकी के दो पॉलिनोमियल बताओगे आप. नाउ व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम? डिविडेंड is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. Okay, this is our division algorithm. Now for remainder also you can take any value. यहाँ पे ऐसा कुछ given नहीं है, so you can take any value. Like for example, I will take r of x is equal to 0. Remainder is 0. Okay. So now only which polynomial is remaining? हमारे पास dividend है, quotient है, remainder है, हमको divisor find करना है. So find out the divisor. Find out the divisor. Put all the values here. P of x, it will be equal to g of x multiplied by q of x plus r of x. Now what is the value of p of x? 2x square minus 2x plus 14, which is equal to g of x. We need to find it. q of x है हमारे पास x square minus x plus 7 plus 0. Okay, so how we will get g of x? G of x will be what? 2x square minus 2x plus 14 divided by x square minus x plus 7. अभी देख ऋषिकेश. Okay, so now see from numerator, if I take 2 as common, so what is remaining? X square minus 2x, sorry, x square minus x, x square minus x plus 7 is remaining, and in the denominator we are having the same term, that is x square minus x plus 7. So if we cancel these two terms, so what we are getting, g of x is equal to 2. So the divisor, which is equal to g of x, which is equal to 2. Okay, in this way you have to solve it. बस starting में आपको क्या condition रखना है जो आपको given है, degree of p of x should be equal to degree of q of x. Okay, is it clear to you?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so start the second one, try the second one. Now here the polynomials might come different, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, बस कंडीशन सेम होनी चाहिए, डिग्री शुड बी सेम. अभी यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट वन, व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ? यस, एनीवन? What conclusion we can draw from this first one? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग? See, when the degree of p of x and q of x it is same, in that case what we are getting? We are getting the divisor and remainder as constant terms. Yes or no? When the degree of p of x and q of x is same, we are getting divisor and remainder as constant terms. Write down that conclusion also. When p of x, या फिर डिग्री, डिग्री लिखो यहाँ पे, डिग्री ऑफ p of x is equal to degree of q of x, then g of x and r of x are constant terms. Okay. Yes, anyone has done the second one? Okay, Shravani Shinde has done the second one. So she got p of x as 2x cube minus 2x square plus 2x plus 3. G of x as 2x square minus 1. Q of x is equal to x minus 1 and R of x is equal to 3x plus 2. ओके, तो सेकेंड वन में हमको क्या करना है? डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स एंड डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स शुड बी सेम. तो देखो, अभी हम लोग पॉलिनोमियल लेंगे. सबसे पहले क्यू ऑफ एक्स. ओके, सो क्यू ऑफ एक्स, सपोज इफ वी टेक एक्स प्लस वन. ओके, उसके बाद आर ऑफ एक्स लेते हैं. अगेन द डिग्री शुड बी सेम, सो वी विल टेक इट 2x+3. यू कैन टेक एनी पॉलिनोमियल. ओके, यू कैन टेक एनी पॉलिनोमियल, बस क्या होना चाहिए? ये दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर multiplied by quotient plus a remainder. Okay, now we will have to take the divisor also here. From that divisor, क्योंकि RHS के सारा
वैल्यूज हम लोग जब पुट करेंगे तो हमको एलएचएस का वैल्यू मिलेगा. सो जी ऑफ एक्स को हम लोग कुछ भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं. सपोज इफ आई टेक एक्स स्क्वायर माइनस वन. ओके, नाउ पुट इट हियर. तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स. अब यहाँ से आप पी ऑफ एक्स बनाओगे. यस, टेल मी व्हाट इट विल कम पी ऑफ एक्स. सो जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स प्लस वन प्लस आर ऑफ एक्स इज व्हाट टू एक्स प्लस थ्री. बनाओ अभी यहाँ से पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जनरेट करो अभी यहाँ से. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस व्हाट टू. टू या वन. सर टू. ओके, टू इट इज कमिंग. Got it? So this is P of x. Only we have to take the degree of Q of x and R of x as same for the second one. Now what conclusion we can draw from here? What conclusion we can draw from here? Yes, try it. गलत भी होगा तो भी no problem. सब कुछ आपके सामने है. What conclusions we can draw from here regarding the degree? Yes, anyone? See, when degree of q of x it is equal to degree of r of x. इसपे से हमको क्या समझ में आता है? both degrees should be less than what? p of x and g of x. Yes or no? Is it clear to you? Last one is quite easy. आपको बस r of x जीरो रखना है और पॉलिनोमियल्स बनाना है. Last one you will do it. Okay, Shravani, that's correct. I think so. For second one also you have taken this polynomials only. Third also this polynomial. Okay. Okay, so shall we start the extra questions now?
We will do the extra questions of this topic. See, the questions are displayed. See, from that, the conclusion which comes is what? When the product of q of x and g of x form a polynomial whose degree is equal to degree of p of x. When the product of q of x and g of x form a polynomial whose degree is equal to p of x. Okay, now see the first question. If 4x square minus 6x minus m is divisible by what? X minus 3, the value of m is. बोलो अभी कैसे करेंगे? Yes, anyone? Just tell me in short how we will do this. Sir, may I? Yes, बोलो श्रावणी. Sir, first we will equate x minus 3 Okay. equals to the 0, and Okay. then we will get x value as 3, and Okay. then we will put up the value in 4x square minus 6x minus 1, and then we will get the value of m. Okay, correct. In that way you will get the value of m. तो अभी देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट वन हम लोग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x क्या है? इट इज 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m. उसके बाद g ऑफ x क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग x माइनस 3. तो ये g ऑफ x को क्या करेंगे हम लोग? 0 के साथ इक्वेट कर देंगे. तो x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ x विल कम व्हाट? 3. Okay, so the value of x will come what? 3, as it is already given that this x minus 3 is divisible by this polynomial. It is already given in the question, so we got the value of x from that. Now what we will do, we will put this value of x in the given polynomial, that is p of x. So put x is equal to 3. ओके, बट जब हम ये x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा. सो p ऑफ x विल बी इक्वल टू 0. सो p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 0. अभी वैल्यू पुट करो. 4 इन ब्रैकेट 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इन ब्रैकेट 3 माइनस m इज इक्वल टू 0. बोलो अभी कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आएगा? 18. 18. 30. Okay. 18 it will come. See, 9 multiplied by 4 is 36, and 36 minus 18 minus m, which is equal to 0. So from here what we can conclude, m is equal to 18. So the value of m is what? 18. The value of m is what? 18. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. In 9th standard also you have done the same process. Now second one is like the first one only. Check whether the first polynomial is the factor of second polynomial. अभी यहाँ पे आपको division use करो ऐसा mention नहीं है question में. So what is the other way? जो अभी हमने first question में follow किया, that is the other way. Okay, to check whether this x minus 2 is the factor of this x cube minus 3x square plus 4x minus 4. तो बोलो क्या करना पड़ेगा? What we will have to do? First, to find the 0 of p of x, we will have to equate the g of x with
0. Okay. From that we will get 1 0, that is x is equal to 2. Okay. See, we will do a. सेकंड में a वाला हम लोग करेंगे. तो यहाँ पे आपका p ऑफ x क्या है? इट इज x क्यूब minus 3x square plus 4x minus 4. And what is g of x? g of x is equal to x minus 2. So g of x को 0 के साथ इक्वेट कर दो. So what you will get? x minus 2 is equal to 0. So x will come equal to 2. Now what you will do? Put. तो p of x also equal to 0. अभी हम लोग क्या पुट करेंगे? Put x is equal to 2. तो क्या हो जाएगा? p of 2 should be equal to 0. तो अभी p of 2 निकालेंगे. तो x के जगह पे बस 2 पुट करना है p of x पॉलिनोमियल में. सो दिस विल बिकम व्हाट? 2 क्यूब माइनस 3 in bracket 2 square plus 4 in bracket 2 minus 4. Whether it is coming equal to 0 or not, please check it. So 2 cube is 8 minus 4 Yes, into sir. 3 is 12. Yes, sir. This is 4 twos are 8 and this is minus 4. Okay, so 0 will come equal to 0. That means what we can say? G of x is the factor of p of x. यहाँ पे हमने डिवीजन परफॉर्म किया क्या? नहीं किया. Without that also we can check it. Okay, so when the questions come for 1 mark and 2 mark, you will use this process. जब क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो आप डिवीजन अप्लाई करोगे. ओके, और वैसा मेंशन होगा क्वेश्चन में कि आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना है. Similarly, try the second and third one. Same process. So yes, it is a factor here. For second one, what it will come? For second one, what it will come? Sir, 0. Yes, it is also a factor here. Okay. And for C, remainder might not be coming 0. So no, it is not a factor. So g of x is not the factor of p of x. For third one, for second one, g of x is the factor of p of x. Okay. Shall we start the third one? Shall we start the third question? Okay, now see the third one. First, I will erase the screen. What is given in the third one? The value of m in order that x square minus mx minus 2 is what? It is your quotient, where x cube plus 3x square minus 4 is what? It is divided by x plus 2. तो बोलो अभी क्या करना पड़ेगा? Yes, who will tell me? यानी ये आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल है, ये आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल है.
ओके, और ये दोनों का डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपको ये कोशेंट वाला पॉलिनोमियल मिल रहा है। ओके, तो वहां पे आपको ये m का वैल्यू निकालना है। सो एक्स क्यूब प्लस 3x² -4, दिस इज माई डिविडेंड पॉलिनोमियल। व्हाट इज माई डिवाइजर पॉलिनोमियल? x+2। तो ये डिवीजन परफॉर्म करो, आपको एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल मिलेगा यहाँ पे, वो और ये पॉलिनोमियल को हम लोग बाद में इक्वेट कर देंगे और वहां से हम लोग m का वैल्यू लिखेंगे। So x square multiplied by this divisor, what we will get? X cube plus 2x square. Here minus sign, here minus sign. This first term will get cancelled. Now plus 3x square and minus 2x square, it will give us x square. Okay. Next is what? Minus 4. Now x square divided by x will give me what? X. So plus x, ये x से इधर मल्टीप्लाई कर दो, what you will get? X square plus 2x. Here minus sign, here minus sign. This term will get cancelled. So this will come minus 2x minus 4. Now next term is what? Minus 2x divided by x. It will give us minus 2. Okay. अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2x -4। तो अभी -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -2x -4। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, एट द लास्ट रिमाइंडर विल कम व्हाट? 0। तो ये हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल मिला है। q ऑफ x क्या मिला है हमको? इट इज x² plus x -2, but what actually is given to us? q of x, it is equal to x² minus mx -2. So comparing these two, okay, comparing these two, we will get the answer now. अब बस ये सेकेंड टर्म कंपेयर करना है। तो देखो x is equal to -mx, तो x कट गया, m will be equal to what? M will be equal to -1. Is it clear to you? Yes, sir. Next question is of long division. Start the next question. Okay, anyone got the answer for fourth one? Long division. Anyone got the answer for fourth one?
Anyone got the answer for fourth one? 2y cube plus 5y square plus 2y minus 7. Correct. After performing the division, you will get the remainder as 0, and the quotient polynomial will be 2y cube plus 5y square plus 2y minus 7. Okay, now fifth one, what they have said, if the polynomial 6x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x square plus 4x plus 1, the remainder comes out to be ax plus b. Find the value of a and b. तो आप सबसे पहले इन दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन परफॉर्म करोगे, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. उसके बाद में जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर को आप ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करोगे और वहां से आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा. इज इट क्लियर टू यू? Is it clear to you? Suppose you will get the remainder like this. Suppose you get the remainder like this 2x plus 3. तो इसको आप ये इसके साथ कंपेयर करोगे ax plus b. तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3. So in this way you will get the value of a and b. This is not the actual remainder. Huh? I have just given you the example. In this way you will get the value of a and b. And for the last one, two zeros are given. From that two zeros, what you will do, you will generate one polynomial. With that polynomial, you will divide to this polynomial. This 2x raised to 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1. You will get one quotient polynomial. From that quotient polynomial, you will generate remaining two zeros. Okay. We have seen such type of question in exercise also. These are extra questions, so you need to do it in your extra questions notebook only. I am not getting fifth one. Okay. See, only 1 minute is remaining. तो आप इसको डिवाइड तो करना आता है ना आपको तेजस? डिवीजन एल्गोरिदम 6x to the power 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7. This is my dividend and I have to divide it with 3x square plus 4x plus 1. तो ये जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तो आपको क्वोशंट मिलने वाला है 2y cube plus 5y square plus 2y minus 7, and at the last remainder will come 0. Okay, now there is very less time remaining, so it is not possible to explain it now. Try this
If you are not getting it, don't worry. Tomorrow I will clear it again. Okay, Tejas? Sir, Hmm. sir, its quotient is 2x square plus 5. Its quotient is okay. रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, हाँ, ax प्लस बी फॉर्म में आएगा कुछ तो भी. Sir, remainder is x plus 2. x प्लस टू. ओके, इसको जब आप ax प्लस बी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको a विल कम 1 एंड b विल कम व्हाट 2. A and B will come 1 and 2. Tejas, don't worry, I will explain it tomorrow.